Hello, my dear students. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. स्वामी जी के इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस कोर्स इंट्रोडक्शन सेशन. इस सेशन में आई विल बी टेलिंग समथिंग अबाउट मी, about an infinity info solution, followed by briefly about this entire course. What are the prerequisites of the course, how the course is organized, what are the contents of it, followed by how you are going to extract the maximum benefit out of this course. So let's begin with my introduction. My name is Prasad Sase and I completed my bachelor's and master's from Pune University in computer engineering. Having some core interest in learning foreign languages, I completed my bachelor's under Japanese language also. Not by the chance, but by the choice, I opt for the teaching career and I joined as my first job to a very prestigious institute under Pune University, and that is Vishwakarma Institute of Technology. There I worked for 5 years from 2000 to 2005, and then I switched to another well-known college, Siagad College of Engineering under Pune University, and there I worked for 6 years. Having this 11 years of teaching experience with university teaching, then I decided to start with my own firm and to move into the corporate training activities. And we started with N Infinity Engineering Academy in 2011, and later on in 2016, we started with N Infinity Info Solutions. So till date, having 24 years of total experience in technical teaching. To impart the technical knowledge up to the extreme deeper sense, I completed some of my global certifications also, and those are I am a Oracle certified Java programmer as well as Oracle certified advanced Java programmer. Also, I am a Red Hat certified system administrator. Followed by that, having some Japanese certifications under my belt, I completed N5 level for Japanese, N4 level for Japanese, as well as N3 level for Japanese global certifications. I am a CDAC certified professional also. And then in year 2011, we started with, as I mentioned, we started with N Infinity Engineering Academy. The name selected is for the purpose of we want to provide infinite amount of opportunity to all our students. And then later on, we started with the next firm, that is N Infinity Info Solutions. Under N Infinity Engineering Academy, we do cover some of the conventional courses like data structure, advanced data structure, competitive programming, theory of computation, as well as microprocessor techniques. And under N Infinity Info Solution, we do cover some of the very genuine courses up to the industry expectations level. And those are C programming, C++ programming, core Java, advanced Java, basics and core Python, and OP and advanced Python. Under N Infinity Info Solution, we do cover some of the internship programs and project development so that students can get the awareness of how the live projects can be developed and they can get benefited across it. As well as we do cover some foreign language courses with respect to specifically Japanese as well as spoken English. Then these are the two very genuine courses that we do provide with respect to the job assistance, and these are Java full stack development as well as data science and analytics using Python. The recent development is recently we launched a very unique course, and that particular course name is Tech Nihongo. Nihongo is a Japanese language. So it's a unique blend about technology, technical skills plus Japanese language skills. And right now we are running the batches so that people who are having technical excellence through our courses and will get benefited through Japanese language courses and will be ready to get placed in Japanese IT industry. So some of our potential recruiters for this course are this, who are going to work with the people
that we are going to supply from N Infinity Info Solution with amazing technical skills plus Japanese certifications. Some of the significant achievement is N Infinity Info Solution has produced Theory of Computations University topper twice. Some of the students are got placed in some of the well-known industries. These are some of the students who got benefited across Oracle certification batches and able to achieve their own global certification, that is Oracle Certified Associates. And very proud to share with you that near about 6,500 plus happy students who are enjoying their life in different technological fields. That's it about N Infinity Engineering Academy and N Infinity Info Solutions. Now let's move into the discussion about what are the contents of this course in a very brief manner. So the name of the subject is Programming and Problem Solving. इसको आप शॉर्ट फॉर्म में PPSB कह सकते हो, राइट? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, न्यू सिलेबस 2024 के हिसाब से कॉमन टू ऑल ब्रांचेस. पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो सब्जेक्ट जरूर प्री रिक्विजिट के रूप में यहाँ पे काम में आने वाला है, पर इस सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ दिस सब्जेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, what is the teaching scheme, how many credits are there, examination scheme क्या है, how many units are there, unitization कैसे किए हैं, how it has been organized, and lab session में हम लोगों को क्या क्या करना है. सारा डिटेल डिस्कशन इस सेशन में करेंगे एंड फिर स्लाइटली मूव करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट के डिस्कशन के लिए, राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व द टीचिंग स्कीम का अगर बात करें हम लोगों ने तो यहाँ पे थ्योरी के लिए 2 आवर्स पर वीक है, प्रैक्टिकल के लिए 2 आवर्स पर वीक है. टोटल क्रेडिट्स गिवन आर 4 क्रेडिट्स फॉर दिस सब्जेक्ट. एंड एग्जामिनेशन सिस्टम का अगर बात करें तो 125 मार्क्स के अगेंस्ट आपका इवैल्यूएशन होगा, राइट? उसमें से 25 मार्क्स फॉर टर्म वर्क. You know how the term work process is now because you are into the now second semester and you must have experienced all term work activities in your first semester, right? So 100 मार्क्स का थ्योरी भी डिवाइड कर चुके हैं दो फैक्टर्स में. वन इज 30 मार्क्स का CCE, continuous and comprehensive evaluations, right? Okay, and end semester 70 marks all 5 units के ऊपर, right? So one by one units में चलेंगे and the first unit over here goes with प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग. सो जैसे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सी प्रोग्रामिंग वाज द कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडर द स्टडी. यहाँ पे ये पूरे सिलेबस में हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत बढ़िया वे से एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस पर्टिकुलर सिलेबस बिकॉज कंप्लीट सिलेबस इज फोकसिंग ऑन टू वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे आपने एपीएल में फोकस किया सी के ऊपर and now you must have achieved some kind of comfort level into the C programming language. वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है वो आपका फाउंडेशन क्लियर कर देगा अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो फर्स्ट यूनिट में यू कुड बी एबल टू सी दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट पार्ट है एंड देन starting from the historical details about the Python, what are the application domains of Python, programming paradigms Python ने क्या क्या यूज किए, all those historical basic aspects of Python we are going to study into this first unit, right? Okay, जब हम लोग second unit में चलेंगे so we could be able to see that this is most fundamental unit that is there into the entire syllabus because ये unit flow control के ऊपर काम करने वाला है and we know that the flow control is definitely going to make your logic building very strong, right? So decision control statements, that is यहाँ पे decision making statement and loops के बारे में यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो. उसके साथ ही इस पर्टिकुलर यूनिट में आप स्टडी करने वाले हो
पाइथन के 4 एडवांस डेटा टाइप्स, दैट आर टपल्स, लिस्ट, सेट एज वेल एज डिक्शनरीज, राइट? सो इन ऑल पांचों यूनिट में दिस पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि आपका लॉजिक बिल्डिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सको, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट इनटू दिस इट गोज विद functions and strings. So what are the functions? Functions are the very beautiful concept of programming which helps you to keep the modularity into the programming application domain, right? So this unit is dedicated for two aspects, functions as well as most important entity, that is what? Strings. So those section में ये unit बढ़ चुका है. First section is for functions and next is for what? String and उसके ऊपर होने वाले various operations, and we know that those operations are known as string manipulation functions. तो ये यूनिट पूरा का पूरा डेडिकेटेड फॉर फंक्शंस एज वेल एज स्ट्रिंग्स, राइट? ओके, नेक्स्ट यूनिट का अगर बात करें तो नेक्स्ट यूनिट इज गोइंग फॉर फाइल हैंडलिंग एज वेल एज जो एडवांस एक डेटा टाइप है दैट इज डिक्शनरीज, वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, राइट? सो पूरा का पूरा फाइल हैंडलिंग, हाउ द फाइल्स आर मैनेज, हाउ द डायरेक्टरीज आर मैनेज, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑन टू द फाइल एंड दोज थिंग्स, हाउ टू मैनेज इट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरीज, ये भी स्टडी करेंगे। एज वेल एज हम लोग डिक्शनरीज करके जो एडवांस डेटा टाइप है उसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो ये हुआ पहले 4 यूनिट्स एंड द लास्ट यूनिट इज वी आर गोइंग टू मूव इनटू द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ object oriented programming, right? So complete last unit is dedicated for OOP, object oriented programming. So इस यूनिट में most fundamental aspect that we are going to observe against object oriented programming is what are the different classes as well as what objects, what are their fundamentals, and then 4 pillars of the OP, that is encapsulation, that is data hiding, then inheritance, polymorphism, abstractions, right? As well as how the object can be constructed, how they can be destroyed, followed by the garbage collections as well as static method, right? So बहुत ही यूनिक यूनिट है एंड यहाँ पे आपका ओपी का फंडामेंटल जितना भी आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो सारा का सारा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. So in all, these 5 units are organized and you will be tested against 70 marks for this particular 5 unit, right? So ये हुआ theoretical discussions about this 5 units and उनका slight introduction, right? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर यूनिट के पहले उस यूनिट का पूरा इंट्रोडक्शन में देने ही वाला हूँ, राइट? ओके, सो लैब कैसे ऑर्गेनाइज है इसके बारे में बात करते हैं, राइट? सो लैबोरेटरी जो है obviously term work इसके अगेंस्ट 25 मार्क्स का है, बट मोर इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन ओवर हियर इज 14 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स एंड ये सारे के सारे असाइनमेंट मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ असाइनमेंट है वो 2 सेक्शन में बढ़ चुके हैं, सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी, एंड बिलीव मी दैट सेक्शन ए में ऑल यूनिट्स के ऊपर सेपरेट सेट ऑफ असाइनमेंट इज गिवन एंड सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे वंस वी फिनिश विद सेक्शन ए, राइट? सो यहाँ पे दिया है एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए और ग्रुप ए, राइट? Okay, and then faculty can go on selecting any 4 assignments from group B, right? So 5 units, हर unit के at least 2 assignments, total 10, and group B के कितने करने हैं? 4. So total how many assignments to go with? 14 assignments into the laboratory, right? Okay, so let's see like how this has been organized, and you will be surprised to see like यहाँ पे हर unit के लिए minimum 8 to 12 codes are given, right? सो इन ऑल यहाँ पे प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होने वाला है, राइट? सो यूनिट 1 के अगेंस्ट स्टार्टिंग विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन वी कुड बी एबल टू सी 8 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर गिवन, राइट? इसमें से आपको 2 करने हैं, दोज विल बी सिलेक्टेड बाय योर फैकल्टी, बट अपने कोर्स में जितने भी असाइनमेंट है सारे के सारे करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर दैट अगर आप इन असाइनमेंट को मेरे साथ करते हो तो योर पाइथन प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल will be more and more crystal clear, right? Okay, so now unit number 2 के लिए we go with what? Again, how many sets? 11 assignments are given for that. Next is unit number 3 के लिए again 11 assignments are given. Next to that unit number 4 के लिए 12 problem statements are given and unit number 5 के लिए 10. Approximately 50 problem statements are given, right?
Okay. So instead of limiting ourselves for only 10 out of 50, what we are going to do is हम लोग पूरे के पूरे 50 प्रॉब्लम स्टेटमेंट करने ही वाले हैं, so that overall grooming हो सके. And Python programming language with programming, we need to understand it up to its extreme detailings, right? Okay. Next to that, अगर ग्रुप बी का बात करते हैं तो ग्रुप बी में यहाँ पे there are certain application domains from mechanical, civil as well as electrical engineering. Some problem statements are given, मैं वो भी दिखाता हूं आपको. And then उसमें से 4 problem statement आपको applications के रूप में implement करने हैं with the help of what? Python programming language, so that whatever you have studied in Python, can you be able to apply it in an application domain with respect to mechanical field, civil field, electrical field or any other fields, right? तो यहाँ पे restrictions mechanical, civil and electrical के लिए problem statements are given and those are this problem statement. So electrical engineering के कुछ problem statements which we can solve it with the help of Python, that is mentioned over here. Next to that, these are civil engineering का problem domain and next one is mechanical engineering का problem का list, right? So this is what the organization of entire subject. So in all 5 units 50 assignments, उसके लिए हम लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट? So I do agree that you are eager to enter into the unit 1 as fast as possible. Yes, definitely. मैं भी उतना ही eager हूं आपको लेके जाने के लिए इस PPS के entire syllabus में, right? So what is the plan for this? हम लोग unit 1 से ही शुरू करेंगे and after each unit or within each unit we'll be solving all the prescribed problem statement that are given by what university, right? So in all, total theory plus 50 assignments plus whatever is suggested by this group B, वो सारे के सारे असाइनमेंट्स अपने इस सीरीज में करके देखने वाले हैं, राइट? डेफिनेटली वीडियो का लेंथ लंबा नहीं होगा. Maximum length of the video may be 20 to 25 minutes so that you can do it in a more attentive way, right? So that's it from my side about this, and let's move into the detailings about Python programming language with the subject as PPS from the next unit, right? इस सेशन में इतना ही रखते हैं and be ready for achieving highest marks in PPS subject and excellence in Python programming language, and that is a guarantee from my side. So thanks for watching this session. Happy learning and thank you very much.